अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान हैं और इन दोनों का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और वो पाकिस्तान में आए हैं आबी मामलात, पानी के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने। और उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और जो दूसरे इदारे हैं जो कि आबी वसाइल को मैनेज करते हैं, उनका इंतज़ाम करते हैं, उनसे इनकी गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू का जो मौजू था वो ये था कि पाकिस्तान जिसे पानी की कमी का सामना है, एक बहरान का सामना है, और आप आजकल हमारा मुल्क ख़ास तौर पर इस बहरान का सामना कर रहा है, उसको किस तरह हल किया जा सकता है। और चूँकि ऑस्ट्रेलिया का इस शोबे में काफ़ी तजर्बा है और वो तजर्बात जो कि ऑस्ट्रेलिया ने किए वाटर मैनेजमेंट के सिलसिले में, वो हमारे साथ ये माहिरीन जो हैं ये शेयर करने के लिए आए। मैं इन दोनों मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर जॉन डॉर, और वो एक वाटर स्पेशलिस्ट हैं, पानी के मामलात के बारे में माहिर हैं, आबी मामलात के बारे में माहिर हैं, उनका ये फील्ड है और शोबा है। और उनके साथ एक पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलवी भी हैं जो डॉक्टर मुबीनुद्दीन अहमद हैं, और वो भी पानी की जो मैनेजमेंट है, यानी पानी को ज़ाया ना होने देना, पानी का बेहतरीन इस्तेमाल और इसका एक मुफीद इस्तेमाल जो है, इस शोबे के वो माहिर हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं और वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं। हम उनसे भी सवालात पूछेंगे कि पाकिस्तान किस तरह मौजूदा आबी बहरान से निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस प्रोग्राम। It's a pleasure to be here. Thank you. Dr. John, you must have spoken about Pakistan's water woes with the Pakistani leaders or the Pakistani water managers. So what is your view? How Pakistan is doing on this front? Is Pakistan doing it smartly, or they need to mend their ways? Well, I think we've heard much about Pakistan's water conversations with strong views on either side. We, as guests in Pakistan, are trying to understand the basis of your challenges. We have many of our own challenges in Australia, as you would well know, and we've been sorting through those over the last few decades. Pakistan and Australia have a water and agriculture focused partnership since the 1980s, but in recent years and just this week we've refreshed our Memorandum of Understanding for cooperation between Government of Pakistan and Government of Australia, and that's in the field of integrated water resources management. So it's really looking at the water system and different places where we might be able to cooperate and assist each other. Dr. John, the common perception in Pakistan is that we Pakistanis are losing a lot of water, wasting a lot of water. And if we had used this water, or we had learned to use this water in a wise way, probably we would not have been facing this acute shortage of water. Is that true? Well, I'm sure we can all improve. In our own experience, until we really understood the base of our water resources system, and until we then applied incentives and regulatory framework around our system, it was very hard for us to sort of improve the efficiency with which we've used water. Yeah. So we had to really get cracking on understanding our system, measuring our system, and then having conversations in our own country as to what would be acceptable rules and regimes to sort of bring in so that we would start managing our water more efficiently and effectively. But do you think that your experience in water management, your experience in Australia, can be of some benefit to Pakistan as well? And you think that the two situations are identical? Oh, I don't think they're identical, of course. I hope, and
Dr. Mubin will elaborate in a moment. We think there's already evidence of good progress in some exchange of understanding between our two countries. But of course, we don't imagine the countries to be identical. I mean, we only have 25 million people. You have, what, 209? But in the context of water management. Yeah, but in the context of water, where the driest inhabited continent, you also have challenges with water scarcity. We each have a federation. So in terms of both natural system and also the governance system that people have created over our countries, there are some similarities, but put good people together to work through challenges, they can soon identify where the areas are we can work together. जी डॉक्टर मुबीन साहब, आप ये वाटर मैनेजमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और आप माशाल्लाह प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पानी का बहरान है वो पानी की सही मैनेजमेंट न होने की वजह से है या जो पानी के सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनमें ख़राबी आ रही है, वो कम होते जा रहे हैं? जहाँ तक पानी की मैनेजमेंट का है, आई थिंक उसमें दोनों फैक्टर्स हैं. एक नेचुरल फैक्टर है, एज आपको पता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से फ़्लो पैटर्न जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसका है. ऑन द अदर साइड जो है जहाँ तक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी खासे इश्यूज़ हैं और ख़ासा उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. तो व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग वाटर मैनेजमेंट ऑप्शन, उसमें यह है कि कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है. वी नीड टू वर्क ऑन बोथ साइड. सप्लाई साइड को भी बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है. उसमें आप यू मे नीड टू स्टोर मोर वाटर एट मल्टीपल लेवल, फार्म पॉन्ड्स बनाएं, आप इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर उसको स्टोर करें, और उसके बाद यू कैन आल्सो थिंक ऑफ लाइक सम मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें डैम्स वगैरह कंसिडर हो सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आई मीन देयर इज़ अ नीड टू मैनेज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि जो कि अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा रेजरवायर है. यू कैन स्टोर वाटर अंडरग्राउंड और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ये जो आप फरमा रहे हैं कि पानी के रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो इंडस बेसन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके तहत हम 3 दरियाओं का पानी यूज़ कर रहे हैं. आपके ख्याल में वो पानी कम होता जा रहा है? क्या आपकी इंफॉर्मेशन है? उसके मुताबिक जो करंट फ्लो पैटर्न है वो तो जो है ट्रीटी के मुताबिक जो इंडिया का राइट है, दे आर यूजिंग इट एट प्रेजेंट और वो उसको यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड द मेन जो है इश्यूज़ हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वी रियली नीड टू मैनेज उसके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, ताकि उसको हम उससे पाकिस्तान ने मैनेज करने हैं. वो पाकिस्तान ने मैनेज करने हैं. ठीक है. एक तस्वर ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं अप इन द नॉर्थ, वो सही तौर पे पिघल नहीं रहे या ज़्यादा पिघल रहे हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है. हाँ जी, ये क्लाइमेट चेंज जो पैटर्न है कि जो हमारा पर्टिकुलरली जो इंडस रिवर है उसमें एक खासी प्रपोर्शन जो है फ्लोज़ की वो स्नो एंड ग्लेशियर मेल्ट से आती है. अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से बाद औक़ात जो है प्रेसिपिटेशन वो स्नो की बजाय रेन की फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से आपका वो फ्लो पैटर्न जो चेंज हो रहा है. अगेन इस पर खासी अनसर्टनटी है. दिस एरिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ताकि इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके. आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के वाटर मैनेजर्स हैं या वाटर मैनेजमेंट के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, उनको तरबियत या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? पाकिस्तान आई थिंक इट्स वन ऑफ द फॉर्चुनेट कंट्री के यहाँ पे बहुत अच्छे वाटर एक्सपर्ट मौजूद हैं एट इंडिविजुअल लेवल. व्हाट इज़ आई थिंक समवट लैकिंग या मिसिंग, जिसको या इम्प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि वो इंटीग्रेटेड थिंकिंग है. We really need to think about what is happening on the hills. कैसे उसमें स्नो मेल्ट से पानी आ रहा है, कब वो रेजरवायर में आ रहा है, और कैसे ग्राउंड वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, एंड देन हाउ इट कैन बी यूज प्रोडक्टिवली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, एनवायरमेंटल पर्पजेज. तो इस लेवल पे इंटीग्रेटेड थिंकिंग की ज़रूरत है. डॉक्टर जॉन, the MOU that has been signed between Australia and Pakistan, how that is going to benefit Pakistan in terms of water management in Pakistan? Well, the way we hope it will provide benefits to Pakistan, but also to the Australians who are lucky enough to be working with Pakistan colleagues through this process, is to
well, the things we intend to share, which we believe may be of great use to Pakistan, are methods and tools in which to really understand the water resources base. That's one area. Also to share with you the different governance reforms and institutional strengthening processes that we've gone through, real examples. Another country, we're not suggesting they should be replicated in Pakistan, but we do believe that there are valuable example experiences that your senior officials and others will find very, very helpful. A third area we put a lot of work into is river basin planning and allocation frameworks. I mean, you can't just start from scratch. So I think that Pakistan colleagues have already in some exchange visits sort of found it interesting the way in which we are managing particular river basins and particular aquifers. We've also put a lot of effort into both trying to improve the efficiency of our water use, but also managing the demand. And if there was one more simplistic message for our conversation, it's that augmenting supply is one approach. Storage, access, reuse, transfers, desalination, all of these things are related. They're related and different ways of augmenting supply, but managing demand is also very significant important for both of our countries, because we have to look at both sides of the equation. And for us, incentives to reduce use have been quite important. Reallocation, and then clear measurement of how much different actors are using, all actors are using. Yeah. Dr. John, we'll have to take a short break and then we'll continue this discussion. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापसी के बाद हम अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखेंगे. ये पाकिस्तान में पानी की मैनेजमेंट के जो पानी हमें मिल रहा है उसको किस तरह बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है आबपाशी के लिए, और इसके अलावा दूसरे मकासद के लिए पानी जो है पाकिस्तान किस तरह बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है. इस पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक. हम बातचीत कर रहे हैं हम दो मेहमानों से जो ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने इस वक्त जो पाकिस्तान में आबी बहरान है उस पर बातचीत की है. इसके अलावा एक समझौता तय हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कि किस तरह दोनों ममालिक पानी की मैनेजमेंट में जो अपने तजर्बात हैं एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. Dr. John, the supply side. Yes. Pakistan, are you sure that Pakistan is well aware of the fact that its supply line is ensured, it is certain, or there are ups and downs, there are gaps in that supply line? I am well aware that Pakistan colleagues are aware of the amount of water in the system and where it's coming from, and the risks of inefficient water use on the way through. But the question then is how best to sort of move from the situation today to a better situation going forward. And I think what we're just saying clearly is, first of all, just getting a handle on exactly how much water is in the system, what types of water, where is it in the ground, is it in the rivers, who's using it, who's controlling it, do we know, is it, we had many loopholes in our system in Australia in years gone by. When we would come to times of real scarcity, acute scarcity, sometimes our officials were unable to answer the questions that prime ministers would pose. So as a result, there was a lot of political momentum behind clarifying our knowledge base, and we spent a lot of money
developing our systems, developing our tools, developing the institutions, and the hundreds of people working in on them. Pakistan, Yeah. as you have already said during the off-camera conversation, that almost the system is the same, similar federal system Yes. in Australia as we have in Pakistan. So here the water, main sources of water are being managed by the federal government. Yeah. And there is an organization which is known as Indus River System Organization. And you know, I think a similar system must be existing in Australia as well. So these are quite similar situations. So do you think that Pakistan's federal managers or water managers are discharging their duties satisfactorily, or they need to be trained? Well, I think there's a few different parts to your question, Yeah. but in terms of institutions, whilst we each have federal institutions which provide services to society, we've given our URSA equivalent, I think, a broader set of powers and responsibilities, but it is still an organisation. We have various interstate organisations, but the most prominent and well known is something called the Murray-Darling Basin Authority. Previously, in a previous incarnation, it was the Murray-Darling Basin Commission. During the Millennium Drought, one of the decisions we took was to increase the authority of the federal government in our sort of national water system management. So these are things that we've adapted our organisations through time. First of all, it was 2 states, then it's become a larger unit of states and territories, but very much looking at the whole water system and not leaving part out. You don't want an amputated institution that doesn't cover the headwaters or the delta or what have you. In Pakistan's case, you know, the federating units, we have 4 federating units who are getting their water quota through IRSA, and sometimes problems do arise. For instance, one federating unit is complaining that its water quota is not being supplied as per the constitution or as per the regulations. So sometimes, you know, this becomes very problematic. Sure. So is there a mechanism, or do we have a mechanism to solve this issue? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ये है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वाटर अप्रोचमेंट वहाँ पे अकॉर्ड है, जो बेसिन प्लान है जिसके तहत वो वाटर शेयर किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान. और उसमें मेन ये था कि वहाँ पे भी ये चैलेंजेस थे इन द पास्ट के पीपल जो डिफरेंट स्टेट थी वो एक दूसरे के साथ कंप्लेन करती थी, एंड दे फाउंड कि इफ़ दे रियली नीड टू मैनेज द सिस्टम, मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी ए गुड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सब के लिए अग्रीएबल हो. एक सिंपल तरीके से असेसमेंट की जाए कि कितना पानी है, कितना पानी यूज़ हो रहा है, ये सारे असेसमेंट उन्होंने कहा कि इट्स एसेंशियल टू हैव ए मीनिंगफुल डिस्कशन. तो इसी तरीके के साथ पाकिस्तान में भी लकीली वी हैव ए वाटर अप्रोचमेंट अकॉर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. तो उसमें जो है बाज़ का जो डिस्कशन होती है उसमें इट्स बेस्ड अपॉन यही है कि जब आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो या इंफॉर्मेशन एक सबके साथ एक्सेसिबल ना हो, उस वजह के साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं. तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द वे जो 2012 में एक वाटर सेक्टर टास्क फोर्स रिपोर्ट एक रिलीज़ हुई थी, उसमें रिकमेंड किया गया था कि ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जो है पर्टिकुलरली कि जिस तरीके के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको मॉडल यूज़ करके एक सारे स्टेक होल्डर के साथ शेयर की जाती है, इसी तरह का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के लिए खासा यूज़फुल हो सकता है. दैट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द एरिया वेयर वी आर असिस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल है जी वो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है. वो इस वक्त हम जो हैं डिफरेंट फेडरल एजेंसीज, इर्सा है उसमें, वापडा है, प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ हम उसको मिलके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जॉइंटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम उसके इम्प्लीमेंट हो रहा है. इसी तरीके के साथ वी आर आल्सो वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द सीजनल फ्लो फोरकास्ट,
क्योंकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कितना पानी एंटिसिपेटेड है इस सीज़न के अंदर। सो ये भी एक एरिया है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को जो फोरकास्ट है, वाटर फोरकास्ट जी, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है या कोई और सिस्टम्स हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पाकिस्तान में, ताकि ये सही पता चल सके कि कितना पानी आ रहा है टोटल और उसमें से एलोकेशन कैसे होगी? जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग, एक तो हिस्टोरिकल डेटा है, दूसरा ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं, जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि ओवरऑल स्नो कितनी हुई है पिछले सीजन में। सो यू कैन मेक दैट इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जिस तरीके का हमने पाकिस्तान में असिस्ट कर रहे हैं उनको कि किस तरह सीजनल फ्लो फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। ट्रेनिंग जो तरबियत है, क्या ऑस्ट्रेलिया हमारे जो वाटर मैनेजर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे? ये सारी जो है ये इट्स ए को डेवलपमेंट कि हम इनके साथ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और उसमें इट्स बोथ वे लर्निंग, इट्स आल्सो लर्निंग फॉर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एज वेल कि किस किस्म के यहाँ पे चैलेंजेस हैं वो कैसे मैनेज किए जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो हम इनके साथ वो शेयर कर रहे हैं। इट्स ए को डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑलवेज टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हमारा ये प्रोग्राम है इट इज़ STIP प्रोग्राम, वो उसकी 12-year विजन है। जी डॉक्टर जॉन, वन ऑफ द परसेप्शंस इन पाकिस्तान is it's a common perception that the water that we have in our system, it's not being efficiently used, it is being wasted. The terminology wasted or wastage of water in scientific terms, is this okay to use that Pakistan is wasting water, or it is not an appropriate term to describe the situation? Let me see, there's a couple of ways I would approach that. One problem that both of our countries share is salinity. Salinity caused by excessive application Yes. of Water. rising water tables, and consequent sort of terribly negative impacts on our system. So for us, with a particular soil profiles, we've really concentrated on only applying the amount of water that we use, that we need. We don't really want to be having a lot of water sort of filtering through below the root system. So there's a set of practices that we've adopted in our country based upon the soils that we have. I think you share some of those challenges. My understanding is that there are parts of the country where it's clear that that excess water is regularly applied, and it's hard to see that that is a particularly efficient use of what is a precious and scarce resource. I want to add just one other point, if I may. In addition to the technical training, and yes, we've sort of developed hydrological models and stream flow forecasting and whatever else, but equally important is who's actually managing the system. Who are the state officials managing the system? Who are the CEOs of our different organisations? And so they also have a lot of governance, real life practical experience. And we do hope, as part of the Pakistan-Australia cooperation, that it's not just a technical cooperation, though that's very important, and we think that that's has benefits. But we also envisage a good exchange between the people that are charged with managing systems, that have been through periods of reform, that have had to chair many meetings with stakeholders and be criticised from many directions, but ultimately have needed to work through and provide good advice to their governments and see challenging periods through. Because as you well know, it's not just about information. That's very important, but it's also about high quality management and leadership. Yes. Dr. John, I have to take another break and we'll continue this discussion. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद हम डॉक्टर जॉन और मुबीनुद्दीन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी है ऑस्ट्रेलिया से आए हुए दो मेहमानों से। वो मैं बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी की जो मैनेजमेंट है उस पर हमारे दरमियान एक समझौता हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, आबी माहिरीन, वो अपने तजर्बात एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि दोनों ममालिक जो हैं वो पानी जो है उसकी बेहतर मैनेजमेंट, उसका बेहतर इस्तेमाल और ज़्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल जो है वो उसको वजूद में लाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो तस्वर है कि पानी वेस्ट हो रहा है, आपने कहा कि पानी वेस्ट नहीं होता बल्कि वो अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड स्टोरेज जो है वो भी मुमकिन है। पाकिस्तान में ऐसा आम लोगों को पता नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो कैसे मुमकिन है। क्योंकि बिल्कुल बड़ा अच्छा ये वैलिड पॉइंट है। जिस तरह पाकिस्तान में देखें, जितने जो हमारा इरीगेटेड प्लेन है, मोस्ट ऑफ द इरीगेटेड प्लेन में जो है वो रेनफॉल बड़ी कम है और जो ग्राउंड वाटर जो डेवलप हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ द रिचार्ज जो है रिवर सिस्टम और इरीगेशन सिस्टम है उसकी बदौलत हुआ है। सो बेसिकली ये जो है वो पानी जो सीप होके ज़मीन में गया है वो एक स्टोरेज रेजरवायर बना एंड दैट्स इट्स बीइंग यूज्ड करंटली। हाउएवर उसमें यह है कि वी नीड टू मैनेज इट केयरफुली कि जिन एरियाज़ में जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा सलाइन है, अगर वहाँ पे पानी रिचार्ज हो रहा है तो फ्रेश वाटर विल मिक्स विद द सलाइन वाटर और वो यूजेबल नहीं रहेगा, ओवर देयर इट्स अ वेस्ट। जो एरिया जहाँ पे पानी मीठा है और यूजेबल है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए और इरिगेशन पर्पसेस के लिए, सो इट्स नॉट ए लॉस पर से, आई मीन रादर दैट वाटर गोज देयर और वो स्टोर हो रहा है। आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान में आगे काम की ज़रूरत है कि जब एक्स्ट्रा फ्लड हो या एक्स्ट्रा वाटर हो उसको हम आर्टिफिशियली भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द मैकेनिज्म, टेक्निक्स हैं, ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ कर रहा है और कंट्रीज भी यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ये टेक्निक अभी यूज़ नहीं कर रहा, ये कर रहा है, इट्स बीइंग डिस्कस्ड, अभी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। देयर वाज सम डिस्कशन, जो है पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट वो सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर हो उसे रिवर रीचेस के अंदर हम बफर करें ताकि स्लोली वो रिवर के थ्रू रिचार्ज हो जाए। आई मीन इट्स इनिशियल स्टेजेस बट दिस इज़ एरिया जहाँ पे काम आगे मज़ीद हो सकता है। इसके अलावा जो ये तस्वर है कि हमारा पानी जो है समंदर में जा रहा है, समंदर में वेस्ट हो रहा है, ये एक हमारे सियासतदानों का नरेटिव है कि जी डैम्स बनने चाहिए, वाटर रेजरवायर्स बननी चाहिए, स्टोरेजेस होने चाहिए क्योंकि सारा पानी समंदर में बह गया। ये एक कॉमन तस्वर है। ये भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो पानी रिवर में से जा रहा है सी के अंदर या समुंदर के अंदर वो पर से वेस्ट नहीं है, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यूजेस हैं। कि जैसा कि हमारी जो कोस्टल लाइंस है वहाँ पे सॉइल एरोजन हो रही है, अगर वो एक रेगुलर फ्लो रहे और सेडिमेंट जाएँ और डिपॉजिट हों दैट प्रोटेक्ट आवर कोस्टल जोन्स। हाउएवर कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लड आता है और उसकी वजह से डैमेजेस होती हैं, ऑफ कोर्स एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि ये वेस्टेज है। सो अगेन इट्स रिक्वायर केयरफुल थिंकिंग एंड मैनेजमेंट कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टोर करने की, वी शुड स्टोर दैट वाटर। वो आप रेजरवायर बड़े डैम्स में भी कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द मैकेनिज्म के जो जहाँ पे आप डिवर्ट करके फार्म पॉन्ड्स और जो है डिफरेंट लेवल पे उसको भी स्टोर किया जा सकता है। सो यही ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है कि जब मिलेनियम ड्राउट वहाँ पे आया तो ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि जो मरे डार्लिंग रिवर सिस्टम है वहाँ पे समुद्र में जहाँ पानी बिल्कुल जाना बंद हो गया। तो दैट वाज ए बिग थिंग फॉर आवर कंट्री के उस वक्त। तो ये तजुर्बा आप हमारे लोगों से, मैनेजर से शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने रोक दिया पानी समुद्र में जाने के तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका। डेफिनेटली, आई मीन वो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है, लेकिन इट रिक्वायर्स ए डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके के साथ उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। Dr. John, is there any proposal under this MOU that you have signed with Pakistani counterparts to train our scientists, water researchers or scientists or the people who are running this system, water management system? We've, the MOU that's been signed this week is a refreshed statement of cooperation, if you like, with a wide range of areas. Water for energy, water for agriculture, water for cities, these types of things. But already we have, I believe, quite a healthy partnership well underway, and an element of that
is including exchange between scientists and is including an exchange between the officials and other practical system managers. What the MOU, we believe, will enable us to do is to increase the extent of some of that cooperation. We've been trying a few things out together in the last few years. We think some things are working well, and we look forward to sort of a strengthened partnership going forward and doing more together in a range. Do you think that Pakistani managers, those who are managing the water system or irrigation system in Pakistan, they lack technology, modern technology, because that also plays an important role? I mean, each country is using different technologies, and I've no doubt that some practical low-cost technologies that are being used in other countries, including Australia, may be a benefit to Pakistan colleagues. But that said, I mean, Pakistan's already managing such huge irrigation systems. It's already, managing its cities. So there's lots of clever technologies and systems in place that some of our colleagues will benefit from. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है और जो नहरी निज़ाम है, ये अब बोसीदा हो चुका है, ऑब्सोलीट है. क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आपकी क्या स्टडी? ये खासा पुराना सिस्टम है. इट्स क्वाइट प्रोडक्टिव इन द सेंस के वो आपको अभी भी आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी कर रहा है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि आप उसको मॉडर्न उसमें जो है. वन ऑफ द रीज़न ये है कि डेटा कलेक्शन जो है आपके पास, जब तक आप मेजर नहीं करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, किस वक्त है और किस तरीके के साथ आगे उसको एलोकेट किया जा सकता है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फर्दर काम की ज़रूरत है. आपने आगे पूछा जॉन से कि कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है. थ्रू दिस कोलैबोरेशन हमने सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स की हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने तकरीबन 30-35 जो हैं हाइड्रोलॉजिस्ट और जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उनके साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग की हैं. आउट ऑफ दैट प्रोसेस वी टुक देम टू ऑस्ट्रेलिया. एटलीस्ट तकरीबन 15 से 20 जो साइंटिस्ट हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी आके उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं. एंड इट्स नॉट ओनली द मिड लेवल जो हैं, उसके अलावा हमने पॉलिसी मेकर्स को भी वहाँ पे लेके गए हैं ताकि वो देखें कि किस तरह पॉलिसी फार्मुलेशंस हो रही हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप टू मॉडर्नाइज द सिस्टम, और उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट के बेनिफिट लेने चाहिए और वो लिए जा रहे हैं इस वक्त. तो Dr. John, this global climatic changes, they are impacting all countries, many countries of the world. Pakistan is also one of those countries which is going to be hit by these global climatic changes. You think that Pakistan is prepared to face the challenges emanating from this global climatic change? I'm a little concerned that not many countries on the planet are well prepared. Both my country, Australia, and Pakistan, I've no doubt, have a lot more to do to be prepared for various of the scenarios which we are being told are quite likely. So I'm certainly in the camp that believes we need to do quite a lot more. That said, it's also sometimes convenient to blame climate change and talk about climate change as though it's the only problem. And I think, again, each of our countries have had and continue to have some inefficiencies in our system that we can do something about. So you cannot just blame the climatic changes? Absolutely not. So you have to be efficient. Well, I think that we have systems in place now that we have responsibilities to sort of to use, and there's many things we can be doing now to improve the way in which we use our precious water. But again, we're using water we need water for our cities, we need water for our agriculture, we need water for our energy production. These things we know very, very well. One of the things we are concentrating on in our own country and also in our partnership with Pakistan is to try and ensure that the conversations we are having together are fostering some type of integrated thinking, and that we're not just talking about surface water, we're not just talking about groundwater, we're not just talking about energy policy
in a vacuum of knowledge about what the water consequences of that are. So we are endeavouring to ensure that in our own country and here, that the conversations are multi-sectoral, if you like. And earlier this week we had a terrific event here in Islamabad where leadership from several of your ministries in relation to water, in relation to energy, in relation to climate change. There was a together, and each providing their angles and perspectives on what their priorities are at this point. So this partnership, although it sits under an MOU on water, is really intending to be of service to multiple ministries and multiple sectors in Pakistan, but of course with our principal signatory being the Ministry of Water Resources. Dr. Sahab, پانی کا efficient use اور conservation of water, پانی کو بچانا، ایک خیال ہے کہ پانی ہم لوگ جو ہیں ویسٹ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اور اس لیے ہم پانی بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی کوئی ٹریننگ یا کوئی اویئرنیس کی کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کنزرویشن جو ہے یہ آل سیکٹر میں ضرورت ہے. جہاں تک سب سے بڑا جو واٹر یوز ہے وہ اریگیشن سیکٹر میں ہے، وہاں پہ واٹر کنزرویشن سے سچویشن امپروو ہو سکتی ہے. لیکن اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا اریگیٹڈ ایگریکلچر. واٹر کنزرویشن از آلسو نیڈیڈ سٹیز، کہ جو ہم گھروں میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آسٹریلیا نے بڑا فوکس کیا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو کرٹیل کیا ہے کہ ہم منیمم جو ہے واٹر یوز کریں، ایون فار شاور کے لیے، اور جو ہے بلکہ جو واٹر آپ کا ویسٹ واٹر آتا ہے شاور کے تھرو، لانڈری کے تھرو، اس کو ری یوز کرتے ہیں فار گارڈننگ کے لیے. تو اس قسم کی میئرز ول بی ڈیفینیٹلی یوزفل فار پاکستان. ایک تصور یہ ہے کہ ایک پر کیپیٹا واٹر کنزمپشن، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کتنا پانی یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ پانی اس زمرے میں نہ آئے کہ یہ ویسٹ ہو رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ اینگل سے آپ اس کا کنزمپشن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک تو یہ ہے کہ جو پینے میں آ رہا ہے یا شاور وغیرہ کے لیے آ رہا ہے، دیٹ از ون وے آف لکنگ دا واٹر کنزمپشن. دوسرا جو ہم فوڈ کھاتے ہیں، کہ مثلاً اگر آپ ویٹ ہے، ویٹ کی پروڈکشن میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف واٹر یوز ہو رہا ہے. اسی طرح رائس جو ہے، رائس پروڈکشن میں پانی یوز ہو رہا ہے. جو میٹ ہے، میٹ میں اس سے کئی گنا زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں. سو دس از انڈائریکٹ وے آف واٹر کنزمپشن. اس میں یہ ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ریڈیوس ویسٹیجز ایز ویل، کہ آف کورس کے پانی کے یوز میں، اس کے علاوہ جو ویسٹ آپ کا فوڈ ویسٹ ہے اس کو منیمائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. سو دس از انڈائریکٹلی آئی مین یو آر انشورنگ کہ آپ جو آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی، آپ اس کو ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں. دوسرا وے جو اس کا کنزرو کرنے کا آپ پالیسیز اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کے کراپنگ پیٹرنز ہونے چاہیے جو آپ کو زیادہ بینیفیشیل ہوں آپ کی اکانومی کے لیے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے واٹر یوز کے اوپر. کہیں ایسا تو نہیں ہم ایسی کراپس کے لیے سبسڈیز دے رہے ہیں جس پہ پانی بہت زیادہ لگ رہا ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر جان، at the conclusion of this conversation, my question would be, what is your view or your assessment that Pakistan will be able to meet the challenge that it is facing in terms of water shortage, water crisis, and water management? Well, my personal opinion, which of course is not as well informed as Dr. Mubin or yourself, in my visits to Pakistan, I'm meeting with government officials, civil society leaders, business leaders, and the intelligent and serious commitment to dealing with these water issues is very, very clear. So I do have confidence that if you find a way in which your best people can have a high quality conversation and make good decisions and then implement, that Pakistan will be able to address many of your important water related challenges. They're not easy conversations here, I'm sure. They're not easy conversations in any country that I know. They're certainly not easy conversations in Australia. We are still in the process. We're in the process. You know, we think we've got it right and we find out we've got some mistakes. Back we go again to the negotiation table.
we have to adjust again, we need some more money, we need something else. So it's a work in progress, but I don't think we have any choice. Australia has no choice, and I don't think Pakistan has any choice. You know, we must press on. So Thank you so of course much. we wish you every success. नाज़रीन, आज ये गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान थे, डॉक्टर जॉन डोर और मोहतरम जनाब डॉक्टर मुबीनुद्दीन, दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के हुकाम से बात की है वाटर मैनेजमेंट के सिलसिले में, वाटर कंजर्वेशन के सिलसिले में, और पानी के एक एफिशिएंट यूज़, और एक मायदा भी हमारे दरमियान हुआ है और दोनों मालिक के माहिरीन जो है इस मायदे से इस्तिफ़ादा करेंगे और तवक्को है कि हम ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। ये जो समझौता हुआ ये दोनों मालिक के मफाद में है। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। जावेद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।